नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राशि टेक्नोलॉजी। आज हम आपके लिए आए हैं स्मार्ट ऑफिस पैरोल। जी हाँ, आज हम आपको दिखाएंगे स्मार्ट ऑफिस का जो नया सॉफ्टवेयर है वो आपको इंस्टॉल कैसे करना है। साथ ही साथ उसमें आने वाली कुछ समस्याएं हैं, उनका भी हम आपको इसी वीडियो में सॉल्यूशन दिखाएंगे। साथ ही साथ हम आपको नई डिवाइस को कैसे ऐड करना वो भी बताएंगे। सबसे पहले आपको जाना है smartofficeparol.com/downloads पर। यहाँ पे आपको इसका डेस्कटॉप वर्जन डाउनलोड करना है। डेस्कटॉप वर्जन डाउनलोड करना के बाद जो कि आपका जिप फाइल में डाउनलोड होगा, डाउनलोड होने के बाद उसको आपको एक्सट्रैक्ट करना है। ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है ये है करीब 45 MB का है। कुछ समय लेगा डाउनलोड होने के लिए। यदि आपका विंडोज 10 या 11 है तो आपको .NET की ज़रूरत नहीं है। यदि आपका विंडोज 7 है तो आपको .NET इंस्टॉल करना होगा। यह हमारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने के बाद हम इसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करेंगे। यह हमारा सॉफ्टवेयर एक्सट्रैक्ट हो गया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम इसका जो सेटअप है उसको राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, जी हाँ, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ही आप चलाएं इसको। देन सेलेक्ट everyone, next, select everyone, then next, then next। जब हमारा सॉफ्टवेयर पूरी तरह से इंस्टॉल हो जाएगा तो हम हाथों हाथ उसमें आपको कुछ परमिशंस देनी होगी, वो हम आपको बताएंगे कैसे देना है। आपको दिस पीसी या माय कंप्यूटर सी ड्राइव, जहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ, प्रोग्राम फाइल 86। यहाँ पे आने के बाद आपको जाना है स्मार्ट ऑफिस के फोल्डर पे, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाना है आपको। जी हाँ, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में गो टू सिक्योरिटी में एडिट में आपको ऐड करना है एवरीवन को। एवरीवन आप टाइप कर सकते हैं, टाइप नहीं कर पा रहे हैं तो आप एडवांस, देन फाइंड नाउ, सिलेक्ट हियर एवरीवन, ओके, गिव फुल परमिशंस, same as trusted installer, give full permissions, same as your user, full permissions, apply, okay, now close. Now open your software first time with new password. Yes, with new password. Old password is smart, now new password is your Biomax and Biomax, login name Biomax. Type here your new login name Biomax, new password is Biomax, then click on login. Now first thing, you know your machine model number, it's K series, N series, whatever. Check on your box or in your machine. Now we have checked your software is licensed or not. Our software is trial. Now you can ask for license key from your vendor, from where you can purchase your machine. Take your license key and use that license key for 1 year free. Now go to device, which series, select your series, go to device. Now click on add new device. Now we can type here right now test, serial number is 1. Our machine IP address is 192.168.1.201. communication key is 1, machine ID is 1. Now click on save. Your new machine is added successfully. Now you can check by selecting your machine and download logs. Your machine is connected. Now go to payroll, employee month, payroll month, click on add new. If I have logged this month, that is March or February or January,
Then when I recalculate our attendance, then it shows this error. Yes, if this error is coming, then it means you have locked your current month. So you have unlocked it. Go to payroll month. Which month you have select here? Delete this month. Yes, delete month. Okay, close. Now go to recalculate, then recalculate. It's done. That's all. Thank you for watching our channel Rashi Technology.